stars on stage? Yes, yes. These are the people who've actually given. Yes, that's what I was waiting for. These are the people who've given the Indian film industry the biggest blockbuster. Kram mein, should I invite on stage the rock star, ladies and gentlemen, the superstar, the pan-Indian star, Adivi Sesh, ladies and gentlemen, come on, make some noise. मेजर साहब को बुलाते हैं जिनकी आदत ही है हिट देना. There comes the very handsome, the super amazing, the super talented Sesh bhai. Welcome. Good to see you and congratulations on this. पहले से ही मैंने बोल दिया है यहाँ पे. You know, as I said, 2022 में this is the team जिसने कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. नॉट जस्ट नेशनली बल्कि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे भी बड़ा धमाल मचाया. वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज पीपल मीडिया फैक्ट्री से प्रोड्यूसर साहब टीजी विश्व प्रसाद जी. कम ऑन, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन. द मैन बिहाइंड कार्तिकेय 2 एंड ऑफ कोर्स अभी धमाका मचाया है सर ने. कांग्रेचुलेशंस, सो गुड टू सी यू सर. वेलकम. एंड अब जिन्हें बुलाने जा रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा जो है वो उनकी रग रग में बसता है. ऑफ कोर्स नोस ऑडियंस को क्या चाहिए वही देते हैं. सर के साथ कोलैबोरेट किया है ऑन कार्तिकेय 2 एंड उसके अलावा द कश्मीर फाइल्स पिछले साल की सबसे बड़ी फिल्म. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर अभिषेक अग्रवाल साहब फ्रॉम अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए. कम ऑन यार. एंड दैट्स नॉट ऑल. वेलकम सर, सो गुड टू सी यू वन मोर टाइम. एक और ब्लॉकबस्टर के लिए आई एम श्योर यू आर तैयार. काम रहते हैं, ज़ेन के साथ चलते हैं लेकिन बवाल कर देते हैं. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज समवन हु इज सुपर पैशनेट अबाउट फिल्म्स. और अभी कुछ टाइम पहले ही महेश बाबू के साथ एक बहुत बड़ी हिट दी है. मैं बात कर रहा हूं अनिल सुनकारा साहब की. एक है एंटरटेनमेंट से मिस्टर अनिल सुनकारा. सर, सम मेजर फैन फॉलोइंग हियर सर. इतना हल्ला, कुछ तो बात है. Okay, now ladies and gentlemen, he is someone who's come along after Major. He's been a part of Gudachari and here G2. Ladies and gentlemen, the Kaptan Sahab, give it up for Vinay, Kumar, Zordar Talia. Welcome Vinay sir. It's so good to see you. So here's the dream team of G2. You can go click, click, click and then we'll do the honors. Can we all make some noise for this amazing team here? तो मैं आप लोगों को पहले से ही बता देता हूँ सर. ऑफ कोर्स अलग अलग फिल्मों में काम किया है हम लोगों ने, साथ में कोलैबोरेट किया है. ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है बिकॉज ऐसा कुछ हमने इस साल तो मतलब ये शुरुआत ही हुई है लेकिन पिछले पूरे साल नहीं देखा. एंड दिस इज श्योरली गोना डू वंडर्स. सो शैल वी डू द ऑनर्स? आई वुड रिक्वेस्ट द टीम टू डू द ऑनर्स एंड अनवेल दिस पोस्टर, या क्या बोलूँ इसको, ये कटआउट पोस्टर, स्टैंडी, आई डोंट नो व्हाट टू से. व्हाट डू वी कॉल दिस? ऑलराइट, सो काउंटडाउन करते हैं सर. ठीक है, काउंटडाउन. वी स्टार्ट विद 10 9 सेश भाई ने जैसे कहा था, we'll do the walk here and we'll do the talk upstairs. So after this quick photo op, we'll go upstairs and बड़े सारे सवाल हैं सर आप लोगों के लिए. Because जैसा मैंने कहा, you've given us a lot of blockbusters, but this looks the biggest blockbuster of all time. So we'll talk about this. It's over to you. Yes, come on, go. Click, click, click.
Hey, hello, bro. गलत कर रहे हो आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो क्या? सर चलेगा ना, थोड़ा चलेगा. All right, so here we are now to invite on stage, ladies and gentlemen. He is someone who's very passionate about films. Seattle से लेके भारत अपनी भूमि तक, he is someone जिन्होंने सिनेमा को हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है और उसके लिए he's tried his best, you know, he's done everything. He's put in his hard-earned money, his blood, his sweat, and everything. Give it up for TG Vishwa Prasad Saab, ladies and gentlemen. बड़े काम रहते हैं हर वक्त, लेकिन इनकी मुस्कुराहट के पीछे इनको भी पता होता है मैंने एक और ब्लॉकबस्टर दे दी है. इस फिल्म के प्रोड्यूसर लेडीज एंड जेंटलमैन अभिषेक अग्रवाल साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. ऑफ कोर्स उन फिल्मों की जिनको इन्होंने सपोर्ट किया है, बैक किया है, एके एंटरटेनमेंट से अनिल सुनकारा साहब, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. G2 और the visionary, the person, the captain of the ship जो इस सब के पीछे हैं, विनय कुमार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. फ्रॉम मेजर, उससे पहले गुड़चारी, एंड ऑफ कोर्स इस टीम के साथ एक बार वापस से वेलकम सर, सो गुड टू सी यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द ड्रीम टीम G2. तालियां तालियां तालियां, and you guys can go click before I ask my questions. Yeah. G2, the most awaited pan-Indian film. What do you have to say about this journey of yours? Yeah, I feel very blessed. तो ये जिन 6 हिट की बात कर रहे हैं उनमें से 5 तो तेलुगु फिल्म के हैं. But the 6th one was major, and I'm so glad that I was so loved over here, overseas, everywhere that I go. The kind of respect I get for major is extraordinary. तो कहीं ना कहीं ये लगा कि यार हम हमेशा से इंडियन फिल्म्स तो बना ही रहे हैं, बस बात ये था कि हम मुंबई में नहीं हैदराबाद में बना रहे थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम अपने इंडियन फिल्म्स को यहाँ पर भी लेके आए. Right. And you've always been pretty vocal about this कि भाई वो इंडियन फिल्म्स होनी चाहिए, you know, pan Indian films जिनकी बात हम करते हैं. Yeah, I truly believe that we're Indian first. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम ऐसे जगह पे लॉन्च करें जहां पर लोगों को पता चले कि हम भी इंडियन फिल्म्स ही बनाते हैं. राइट, एब्सोल्युटली. जोरदार तालियां. कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन. विश्वा सर, पीपल मीडिया फैक्ट्री, यू नो, आई हैव हर्ड कि 20 प्रोडक्शंस तो अभी ऑलरेडी हैं जो ऐसा पाइपलाइन में हैं, और शुरुआत ये इससे हुई है इस साल की. You know, G2, what do you have to say about this journey of your production studio and of course your love for Indian films and all of us? So basically I run an IT business. Yes. And when I come to movies, people always ask, hey, why you are getting into movies? So Sesh made us very proud with giving us the Gudachari in our very early days. And
we did Gudachari together with Anil and Abhishek. Yes, sir. And now we are looking at G2 to be starting with a pan-India movie, launch as a pan-India movie, and so start this G2 G series and take it to a pan world. Wow, wow. Now we are talking pan world, ladies and gentlemen. Of course, a visionary. Thank you so much, sir, for sharing that with us. Agarwal साहब, आपके लिए सवाल मेरा ये है that कश्मीर फाइल्स की बात करें, कार्तिकेय 2 जो सर के साथ आपने दी है उसकी बात करें. These are the movies जिनको लेके पहले बहुत हल्ला नहीं मचता है. Content driven cinema is this. You are this mascot of content driven cinema, I would say. Because film आती है, उसके बाद वो इतनी बड़ी हो जाती है that everybody is like, wow, क्या बना दिया. What do you have to say on that? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये हंगामा कर रहे हैं तो कुछ गलत होगा क्या? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा सर. नहीं, कंटेंट मैं ये बिलीव करूँगा कि सिनेमा है. उसको जो प्रेम से बनाएगा वो सबको आदर मिलेगा. और सिनेमा साउथ नॉर्थ नहीं होता. बिल्कुल. वी आर एन इंडियन फिल्म मेकर्स, मतलब इंडियन सिनेमा है जी. मैं वो अपने को वही मानता हूँ. रूट मेरा इंडियन सिनेमा का है. तो इंडियन सिनेमा के बारे में बात. Amazing. Thank you so much, sir, for sharing that. Anil sir, this one's for you. Please मुझे बताएं, आप भी you're very passionate about films and मुझे ऐसा पता लगा है that you definitely know कि audience को क्या चाहिए. वो nubs पकड़ना is the word here or the phrase here. What do you have to say about this collaboration when we have such brilliant people on stage? और आप इनके साथ जुड़े हैं इस फिल्म को बनाने के लिए. First of all, G2 is the answer for everything. Wow. Whatever you told. Wow. And when such dream people come together, people who have dreams, with the hero who had major dreams, yes. major dreams. Major dreams. And we'll soon we'll make it to a major series. Wow. Announcement पे announcement हो रहे हैं, इसे कहते हैं शुरुआत. सर just एक ऑफ द रिकॉर्ड पूछना चाहता हूँ मैं, किसी को नहीं बताएंगे. कार्तिकेय 2 G2 कुछ क्या सर 2 नंबर से कुछ है क्या? लकी नंबर किसी को नहीं बताएंगे, आप मेरे को बता दो अलग से. है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हिट हमें देनी है, ब्लॉकबस्टर्स हमें देनी है. ऑलराइट, सो डायरेक्टर साहब, दिस वंस फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस. whatever we saw on the big screen looks fantabulous. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, come on, for director साहब here. And Vinay bhai, please मेरे को ये बोलिए that we've seen a lot of things, we've heard a lot of things. Major, उससे पहले Gudachari. You've been an important part of both these films. So here, now the journey has culminated into something beautiful with this amazing team. How do you see this journey of yours? First of all, I thank everyone for coming here and taking part of this. I don't know how much I can say right now, but I think this is going to be an epic, immersive experience. Whoa. That's something I can say. And Gudachari is a world which has its unique essence, and we want to push the boundaries and make this franchise universal and get to all parts of the country. Right. Yeah. Thank you so much for sharing that. Pan India, Pan World, sir ने बता ही दिया है. So here is the dream team of G2, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पे. And I know you have a lot of questions for these wonderful people. Can we have the chairs? And then we'll move over to. मैं अभी पूछने वाला था. जी. चेयर मिलेगा. मंगा रहा हूँ सर. आ गई सर. First question. Sesh and team पूरी G2 टीम को बहुत बहुत मुबारक. This is Simran Singh from DNA. Okay. भाई कैसे हैं आप? All good. कैसे हैं आप? Good to see you. Okay, so पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि see Gudachari attained a blockbuster status. So but with G2 it has like become a pan India film or it has gone to next level. But ऐसे कई लोग होंगे especially in North जिन्होंने Gudachari अभी तक नहीं देखी होगी. So how are you trying to reach to them? मतलब there is a continuity या कुछ होता ना कि एक reference हमें होना चाहिए. Can I give a long form answer? Is that okay? चलेगा? इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके लिए. Because I'd like to introduce what we're talking about, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगे क्या है जी क्या हो रहा है correct. So there's an all-time Telugu classic called Gudachari 116, which was remade in Hindi as Farz with Jitendra Saab back in 1967. So as a kid, I saw it in black and white. I saw Mahesh Babu sir's dad, superstar Krishna,
rest in peace, recently passed. It was his film that inspired me to, I don't know, maybe want to be James Bond, want to be sort of एक actor बनने का एक होता है ना. As a very small child, I saw that. So Gudachari, the word itself means jasoos in old Telugu. It's not part of regular usage, but it essentially means a spy. So we wanted to do an homage. So when I did the first part in 2018, I used the same agent number 116 as a dedication to Krishna Garu. And even Jitendra Saab uses 116 in Fars, if you look it up. Then we realized that this has the potential to be something massive. तो हमने सोचा कि इस बार हम नहीं चाहते हैं कि ये सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले. It has to be Kashmir to Kanyakumari to Kansas. So we decided to make this film in an extremely sort of I wouldn't say the word epic. I'd just say the scale of it is very big, and for it I'm so glad that I have the support of the producers of Kashmir Files, the producers of Kartikeya 2, and obviously sort of the OG Anil Garu also. He's sort of given so many big blockbusters in the past. I was just happy to know कि Gudachari was dubbed into Hindi with a very funny title called Intelligent Khiladi. लेकिन 11 करोड़ लोग देख चुके हैं उसे. तो कहीं ना कहीं शायद ये इंटेलिजेंट खिलाड़ी 2 है. बट हमारा इरादा ये है कि हमने जिस तरह से ओरिजिनली प्रेजेंट किया, इस बार हम प्रॉपरली ओरिजिनली हम ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देना चाहता हैं. ओके मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी जी सीरीज बन रही है, सो पॉसिबली कि हम आगे G3 G4 भी देखें. सो जैसे हमारे यहाँ पे एक अभी स्पाई यूनिवर्स आया है, वी हैव पठान एंड टाइगर. सो अगर G3 या G4 में देखें, आप किस एक्टर को आप एज एन एजेंट देखना चाहेंगे? मतलब बीट समांथा और महेश बाबू, a team up that actually will be big screen के it will be a treat. I'm not quite sure. At the moment, I think I'm just selfish. No, but I think the bigger truth is that it's a huge franchise, and we don't know which direction it will go in. But for us, it's always the story that determines it. ऐसा नहीं, मतलब सुनने में अच्छा लगता है यार, 4 एक्टर का नाम लो और फिर बोल दो. But the truth is, जैसे कहानी डिमांड करेगी, we are going to be bringing different sorts of actors into the film, and frankly we'll also be bringing actors from Hindi cinema, actors from international cinema, and actors from other Indian cinema into the film. Thank you. Hi Sesh, just next to him, Russell from PTI. Since this Gudachari wasn't released during that, the pan-India wave that started gripping the nation and all, but over there it was a big hit in the South territories. There has been earlier, there used to be this trend of re-releasing movies. And abroad, this trend is a huge thing, especially when a big sequel is coming. Any thoughts of probably re-releasing Gudachari before G2 so that, people get more familiar with it? It's something we're considering, but the truth also is that it's consistently on the Hindi channels. And it's, as I said, even the online, there's about 11-12 crore people who've seen it. तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस है, बिकॉज फॉर एग्जांपल मैं जब मेजर के लिए शूट कर रहा था हिमाचल में, चिटकुल में, पॉपुलेशन 400, वहाँ पर लोग मुझे इंटेलिजेंट खिलाड़ी करके बुला रहे थे. लाइक दैट इज़ द लेवल ऑफ रीच ऑफ द फिल्म ऑलरेडी. तो आई हैव टू चेक कि कितना वायबल है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द फिल्म इज रीच्ड. Also, when a movie is already made, but it is a relatively new concept, and the hero that is in it, as you were, wasn't as big as today he is. So when G2 comes, the pressure of delivering, and please don't say there is no pressure, obviously pressure is always there, the pressure of delivering a much bigger film is something that probably takes away from the novelty of making a small film and it coming out of the blue and just enamoring to people. Now there's a lot of pressure that you all have to work with, right? I think I think this has been asked to me in every press conference in the last few films for me, because by God's grace in Telugu cinema I've had 6 successes in a row. तो मेरा बस यही है कि हमेशा मैं प्रेशर एक्सपेक्टेशंस के बारे में नहीं रखता हूँ, खुद के एक्सपेक्टेशंस के बारे में रखता हूँ. सो इफ़ यू रीड माई ट्विटर बायो इट सेज एंग्शियस एक्स्ट्रॉर्डिनर, तो मैं बहुत एंग्शियस वैसे भी हूँ. सो वो प्रेशर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ. इट डजंट हैव टू बी एक्सटर्नल.
मैं प्रेशर में रखता भी हूँ वैसे. Hi, Sohail here from ViralBollywood. Shesh, you and the entire team of G2, a big congratulations, and a very happy new year to all of you. Shesh, हम देखते हैं कि मैं हिंदी में आपसे बात करूँगा because your Hindi is very good and I really like to listen to it actually. Shesh, आपकी जो भी फिल्में होती हैं, जैसे हमने ये भी देखा, क्वाइट आप में एक स्वैग है, एक क्वाइट स्टाइलाइज हो एक्चुअली आप भी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, कितने कॉम्प्लीमेंट उस पर भी मिलते हैं. और हम तो बात कर रहे हैं पैन इंडिया की, बट जब ये फिल्म देख रहे हैं तो हम तो पैन वर्ल्ड मतलब तो उस पर भी कितना ध्यान दिया जाए कि एक इंटरनेशनल स्टाइल की फिल्म एक्चुअली ये लग रही है. डेफिनेटली पैन इंडिया तो है ही, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पैन वर्ल्ड ऑल्सो, यू कैन से. नहीं, ये बहुत ही बड़ा गोल है फॉर G2. इट्स इफ वी सेट असाइड द वर्ड्स, मतलब जो एडजेक्टिव्स हैं, पैन कुछ भी, पैन फ्राई भी हो जाए, पॉइंट ये है कि आई थिंक हम चाहते हैं कि ये फिल्म इस क्वालिटी के बनाया जाए कि वी वांट टू बी एबल टू टेक इट एनीवेयर. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार चलो तेलुगु लोगों के लिए ठीक है या देशियों के लिए ठीक है या इंडियंस के लिए ठीक. नहीं, हम चाहते हैं कि कहीं पर भी लोग देखें, इसको एंजॉय करें. सो वी आर प्लानिंग इट इन अ वे, एंड द काइंड ऑफ, आई मीन दिस गाय विनय, ही इज़ द एडिटर ऑफ मेजर. ही एडिटेड मेजर, and the kind of gravitas and skill he brings, frankly, the director of Major, he directed part 1 of this series. Seshi, me, हम सब, भले हमने ये G series को create किया है, हम ज़्यादा इस पे विश्वास करते हैं. हम बोलते हैं यार तू बोलेगा तो हाँ, हम भी मानते हैं कि ये अच्छा है. Like this is the kind of skill set we're talking about. हम थोड़े silent किस्म के लोग हैं, हम ज़्यादा शोर शराबा नहीं मचाते हैं, बट आई थिंक स्वैग उसी में है कि हम काम पे ध्यान रखें एंड दिखाएं कि हम क्या बनाने वाले हैं. या माय क्वेश्चन टू यू, लाइक एज यू वाज टॉकिंग अबाउट प्रेशर, लाइक तो आप पर डेफिनेटली everything निर्भर होता है, in fact, like everyone and how are you going to live this thing actually? To be honest, actually the process has always been the same for us, be it Gudachari or Major or G2. For Gudachari the budget is very less, our ambition is something else. For Major our budgets are different, our ambitions are different. With G2 our ambitions are again over us. So the process is the same, getting roasted in the pressure cooker, that's it. I think हमारा ambition हमेशा हमारे बजट से ज़्यादा होता है. भले इस बार 2 0 ऐड हो गए बजट में, ambition उससे भी ज़्यादा बड़ा है. Hi Sesh, आशीष here, इधर. अरे भाई how are you? कैसे हो आप? Sesh, पहले तो congratulations for giving such a crisp and sexy teaser. और लास्ट ईयर आपने मेजर हिट्स दिए, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस. सबसे बड़ी बात कि जैसे नितिन बोल रहे थे कि जैसे गुडाचारी की बात आई तो रीजनल सिनेमा का टैग था, लेकिन आज 1 साल बाद जब आप देख रहे हो तो आज आपका नाम इस फिल्म से जुड़ा है, अभिषेक का इस फिल्म से नाम जुड़ा है. इसको मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म बोला जा रहा है. इस 1 साल में आए बदलाव को आप कैसे देखते हो? और आपको और अभिषेक को ये बोलना चाहूँगा, आप तो वो पारस पत्थर हो गए, कोई जिस चीज़ पे छू दे रहे हो वो फिर अलग ही लेवल पे पहुँच जा रही है. ये क्या कर रहे हो आप लोग, कैसे चूज़ करते हो? हेलो, अब चूज़ मतलब मेरा सिनेमा खाली एक ही दिमाग में रखकर, और इंडियन सिनेमा मतलब भारत का सिनेमा, ये ऐसा नहीं कि साउथ को ही अच्छा लगे या नॉर्थ को ही अच्छा लगे, क्या वहाँ अच्छा लगे. मूवी बनाने से मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्स के साथ ही मूवी बनाओ या किसी के साथ, मतलब जो भी मूवी बनाओ स्टोरी कंटेंट होना चाहिए. कंटेंट रहेगा तो इंडियन सिनेमा कभी भी चलेगा, ये मेरा एक मानना है. और आप लोगों ने ऑलरेडी कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और काफ़ी मतलब हिंदी में भी जो मैं लेके आया हूँ उसको आदर दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद. तो कंटेंट रहेगा तो कंटेंट को चूज़ करना जो इंडियन मतलब घर घर में जाके जो घर हर बच्चा देख सके, बच्चा सब जन देख सके, वैसी मूवी बनाने की जरूरी है. भाई आई थिंक हमारा बस यही है कि इट्स टॉम हैंक्स, ही सेड इट इन एन इंटरव्यू, सेड अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फ्लॉप फिल्म्स पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे, उन्होंने बोला आई विश आई न्यू दिस टू शैल पास. तो मैं हिट या फ्लॉप कोई भी चीज़ मैं बहुत टेम्परेरी रखता हूँ दिमाग में. मेरा बस भले वो कंपटीशन हो, भले वो कुछ भी हो, वो इट्स अबाउट बीइंग बेटर देन येस्टरडे बस. और किसी भी चीज़ के बारे में सोचते नहीं है कि यार चल, आई मीन इट्स ईजी फॉर मी टू से ऑल्सो बिकॉज बाई गॉड्स ग्रेस पिछले 6-7 साल में एवरी फिल्म आई हैव डन हैज़ डन वेल. every producer here is somebody I'm working with.
द सेकेंड टाइम और द थर्ड टाइम, ऐसा नहीं है कि पहली बार काम कर रहे हैं हम साथ में. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी मुझ पे विश्वास करते हैं और मैं भी वो ट्रस्ट को आई टेक इट वेरी रिस्पॉन्सिबली. तो बस आगे बढ़ना है यार, और बड़ा बनाना है और आगे बढ़ना है बस. मेरा सवाल भी इसी से कनेक्टेड है अवधि, आपसे भी और अभिषेक जी और डायरेक्टर से भी है कि आप तो कह रहे हैं कि आपने कंटेंट बेस्ड इसको भी बनाने की कोशिश की है और इसके लिए एक्साइटमेंट भी है ऑडियंस के बीच में, लेकिन जहाँ तक इस जॉनर की फिल्म्स हैं, जैसे कि अगर अब अभी मिशन मजनू भी आ रही है और भी पहले टाइगर जिंदा है और बहुत सारी फिल्में आई हैं, तो उनसे कितनी डिफरेंट थी ये फिल्म इसको चूज़ करने की वजह उस जॉनर में? आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है हिंदी सिनेमा में दो किस्म के स्पाई फिल्म्स होते हैं. वन इज़ दैट सॉर्ट ऑफ वेरी रियलिस्टिक इंडिया पाकिस्तान काइंड ऑफ, जो रियलिज्म में राजी जैसी फिल्म्स दिखाते हैं, स्पाई फिल्म्स बहुत ही रियलिस्टिक. एंड देन द अदर इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ कमर्शियल, लाइक पठान एंड वॉर एंड ऑल दैट. I think the G series is something else. It's, I would say, it's a decorated reality. मतलब realistic है but काफ़ी decorated है and it's very edgy. तो शायद मैं ये कहूँगा कि the standard of it is not so much about making it more commercial. The standard of it is making it more cooler. एक style दिखाने का एक तरीका ये होता है कि आप स्लो मोशन में चलो या नॉर्मल मोशन में चलो, जिस तरह से आपको कैप्चर करते हैं वो स्टाइल होता है. सो आई थिंक हमारे सीरीज में वी आर नॉट लुकिंग टू it's not like a song dance kind of series. It is a very edgy and cool series. That's the goal that we're going for. But all of it is rooted again in a very realistic thing. Ki it's about India. If you've seen part one, the dubbed version, it's about India. The whole thing, it's a very stylistic take on India. The whole point of it is what he wants to do for the country. Hi, Adivi. Hi. Samir here from Movie Talkies. Bhai, kaise hain? Yeah, so Gudacharya had this thing, Trinetra, the word actually. So I just want to know, from where did this idea come from? The Trinetra agency, is it inspired from some agencies or it is completely fictionalized? And will it be continued in the second part or you guys are exploring something new? It will be continued. It will be continued. Trinetra is the agency for which Agent 116 works for in the film, a reference to Lord Shiva's third eye. तो हमें यही लगता था कि बिकॉज थर्ड आई कैन सी एवरीथिंग, तो एक ऐसा एजेंसी होना चाहिए इंडिया में जो हर इंडियन को प्रोटेक्ट कर सकता है एंड कैन वॉच ओवर एवरी इंडियन. दैट वाज द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग द थर्ड आई. तो हमने वो शिवजी का थर्ड आई त्रिनेत्रा का नाम के लिए यूज़ किया. Hi Adivi, this is Nikita from India Forums. My question to you is, Hindi film industry में हमने आपको देखा Major में, after which came Hit 2 and now G2. तो quite action genre में हमने आपको देखा है. Does ever the thought of being stereotyped to this genre bothers you? यार मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, I always try to sort of have a blend of emotions in my films. जैसे Major में there's a very beautiful love story. तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माई मॉम, माई डैड, दे ऑल शुड बी एबल टू वॉच द फिल्म. तो मैं जितना भी एक्शन करूँ उसमें इमोशन ज़रूर होता है. सो दैट्स व्हाई आई डोंट फील इट्स गेटिंग स्टेरियोटाइप्ड. हाय सर, दिस इज दिशा फ्रॉम न्यूज़ 18. सबको 6 महीने के बाद मिल रहा हूँ. If I remember right, I remember reading last year that when you were making the first movie, you reached out to Krishna Garu and you asked him to, appear in a cameo role. Did you by any chance get a chance to talk to him about G2? The craziest thing was when we were making part 1, I found out that superstar Krishna Garu has an office in my building. तो ये बहुत ही क्रेजी था. तो जैसे वो पता चला मैं भाग के गया and luckily he was there. So when we asked him to act, he said, "Nahi, Amma, I'm already gotten older, so I'm not acting anymore. But you can use any of my clips from the original whenever you want." So we always had his blessing. So in fact, when Mahesh sir opened the AMB multiplex in Hyderabad, which is India's premier multiplex, I remember clicking a picture with Krishna Garu and I said, "From 116 to the other." Wow. Sure. Hello. Can you hear me, sir? Yeah.
यार जिस तरह का रिस्पांस बाहर मिल रहा है, जिस तरह से लोग प्यार कर रहे हैं, जिस तरह से सराह रहे हैं आपको, आपके काम को, और जितना भी काम आपने किया है उसको बहुत तारीफ, बहुत लोगों ने सराहा है, और शुरू से लेकर अब तक कहीं रुके नहीं हैं आप, विद बाय गॉड ग्रेस यू नो। और वी लव कि आप कंटिन्यू करें, और जिस तरह का जो भी अभी हमने ऑन स्क्रीन देखा वो बहुत माइंड ब्लोइंग था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, इतना सारा प्यार इतने कम वक्त में, जो स्टारडम आपको मिला है उसके लिए लोगों को 20 साल लग जाते हैं शायद, जहाँ तक मुझे समझ में आता है एज अ जर्नलिस्ट। जितना प्यार आपको और जितना प्यार आपके काम को मिला है, कहीं इतने सारे प्यार से, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ, डर लगता है कि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? शायद नहीं, क्योंकि काफ़ी धक्के मुक्के खा चुके थे हम, यू नो, इन बिगिनिंग ऑफ माई करियर, यू नो, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम इन इंडस्ट्री, आई डेंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स, मैं बाहर से आया था। सबसे बड़ी बात यह है कि यू नो काफ़ी लोग, काफ़ी हिंदी ऑडियंसेस ये सोचते हैं यार 1 साल में क्या स्टारडम कमा ली बंदे ने। मैं बस ये कहूँगा, इट टुक मी 12 years टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस। ओके, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आपने जब भी इंटरेक्ट किया, शुरू से मैं देख रहा हूँ आप बड़ा जोर दे रहे हैं इस बात पे, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू नो व्हाट यू ट्राइंग टू कन्वे। इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड, यू नो, ये बहुत जोर दे के कहा जा रहा है, और मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ और एग्री करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। रीजनल, और वो मराठी है, और वो साउथ हैं, वो तेलुगु फिल्म है, कोई ख़ास स्पेसिफिक वजह, हालांकि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, हिंदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे जोर दे रहे हैं आप। हाँ, बिकॉज अभी जैसे अभी हम बम्बई में हैं, महाराष्ट्र में सबसे पॉपुलर फिल्म इस वक्त है वेड। नाउ वेड इज़ अ ऑफिशियल रीमेक ऑफ अ तेलुगु ब्लॉकबस्टर मछली। तो मछली ब्लॉकबस्टर है, ये वेड भी ब्लॉकबस्टर है। इन दी ओल्ड डेज वी हैड अ फिल्म रामुडू भीमुडू, जिसको दिलीप कुमार साहब ने बनाया राम और श्याम। फिर उसको रीमेक किया गया सीता और गीता, राम और श्याम को ही सीता और गीता में बनाया। बट देन हमने फिर से सीता और गीता को रीमेक किया गंगा मंगा करके। सो व्हेन यू सी दिस इंटरचेंज, दिस क्रॉस पॉलिनेशन, जिस तरह के आइडियाज़ हम एक के आइडियाज़ को अपनाकर हम जिस तरह से बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं एक दूसरे को, वी आर इंडियंस फर्स्ट। Hi, Sesh Center. You're Mayur here from Beyond Bollywood. Great to see you. Firstly, Happy New Year to all of you all. Sesh, obviously, I didn't have the pleasure of seeing Gudachari, but obviously I saw you, you know, my introduction to you, you know, I would say also as a person who came with Major, and I was obviously very humbled, you know, by that experience, both in terms of cinematic and you as a person. I think the take back for me from that film was, you know, the intensity of the action, you know, and I just wanted to ask you as a film buff, you know, like today, you know, actors, you know, of your age, you know, basically today, like in terms of action, you know, that OTT action, do you think it's on the way, and it's only when an actor is willing to put his body on the line, you know, that's the kind of action which is going to grip. Like even in this teaser which we saw, you know, the background score, you know, it's, as you said, it's cool, and I found it world class. So is that the way to go? You know, an action hero has to put his or her body on the line. I think you have to put your heart on the line, भाई. You know, दिल से काम करोगे तो ही चलेगा. You know, I think वो ज़माना गया कि हम बॉडी डबल्स के साथ काम करें, बिकॉज लोग आजकल वो समझ चुके हैं कि हर चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है VFX में, वो समझ चुके हैं. तो अब जो बंदा असल में करेगा कोई चीज़, जो बंदा प्रॉपर एक्शन करेगा, जो बंदा कोई भी चीज़, इफ़ ही शोज इट इन एन ऑथेंटिक वे, ऑथेंटिसिटी तो हम रिक्रिएट नहीं कर सकते ना. सो द गोल इज टू बी ऑथेंटिक. So glad you said that. Hi, this is Harshada here from Screen Graphia. Here. इंडियन सिनेमा कोई भी हो, एक्ट्रेस के बिना पूरा नहीं होता. तो आपके एक्टर कहा है, एक्ट्रेस कहा है एक, और दूसरा ये है कि थ्रिलर है जहाँ तक मुझे लगता है, तो उसमें एक सिजलिंग, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग होनी चाहिए. तो उस बारे में कुछ बताएं. होनी चाहिए या तो होगी, शायद आप बाद में रिवील करेंगे, उसके बारे में कोई बताएगा? मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी कहानी को सुन लें, फिर आप सिजलिंग और के बारे में पूछें. बट नो, वी विल बी डूइंग द कास्टिंग. द थिंग इज वी हैव जस्ट अनाउंस्ड द प्री-विजन कि हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ इट्स गोइंग टू टेक अस 1.5 year टू ब्रिंग दिस फिल्म टू यू.
इस प्रोसेस में हम अलग अलग प्रेस जंकेट्स और इवेंट्स में हमारे कास्टिंग डिसीजंस, नए नए कंटेंट्स को रिलीज़ करेंगे, बिकॉज ये पहली बार है कि एक ऑल इंडियन फिल्म जो तेलुगु में बनाया जा रहा है वो मुंबई में लॉन्च हो रहा है, ये पहली बार है, बिकॉज हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम ये हर किसी के लिए बना रहे हैं. टुमारो वी हैव अनदर लॉन्च इन हैदराबाद फॉर द सेम फिल्म. But will there be any chance of you'll be casting any of the Hindi film heroine? नहीं, वो तो नॉर्मल है. लॉट ऑफ हिंदी एक्ट्रेसेस वर्क इन आवर फिल्म्स नो. वो तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. अगर मैं स्पेशली अनाउंस करूँगा तो सब मेरे तेलुगु फैंस मुझे ट्रोल करेंगे, बोलेंगे यार हर तेलुगु पिक्चर में तो हिंदी वाले आगे काम करती हैं, अब क्या नया अनाउंस कर रहे हैं. सो आई मीन एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट वांट टू कास्ट द बेस्ट पर्सन फॉर द रोल. शेष यहाँ पर आपके लेफ्ट में. हाय शेष, मुझे याद है जब हिट फर्स्ट केस आई थी तो जब वो हिंदी में बहुत पसंद की गई थी, जब राजकुमार ने किया था, आपने एक लाइव के दौरान कहा था कि हमने हिट फर्स्ट केस को इसलिए हिंदी में नहीं किया क्योंकि हमें लगता था कि कौन देखने आएगा, हिंदी ऑडियंस सिनेमा घरों में हमें कहाँ देखने आएगी. लेकिन अब लगता है मेजर के बाद कॉन्फिडेंस बहुत हाई है हिंदी ऑडियंस के बीच स्पेशली. Yeah, definitely. I mean, you know, by God's grace, 2022 was a major hit for me, so that was good. मैं खुद एक नया एडिशन था. I came into the hit franchise after राजकुमार राव because part 1 was with another Telugu actor. जी. तो फिर राजकुमार राव आए और फिर मैं वाइजैक केस में ऐड हुआ था. So I think it is going to be a multi-city franchise hit. तो मैं ये बस कहूँगा कि जिस तरह की क्रेडिबिलिटी है of this team, you know, the kind of directorial talent we have, the kind of producers we have, जो कोई भी फिल्म को कहीं भी लेके जा सकते हैं. That is their ability. You know, you name it. Every big film that's happening right now in South India, unannounced or announced, is happening between these three guys कहीं ना कहीं. So जिस तरह का team है, we have the ability to bring the film anywhere and bring audiences from anywhere to the film. अभिषेक आपसे मेरा सवाल है, जो स्पाई फिल्में हैं उसका जो फ्यूचर है आप वो कैसे देख रहे हैं इंडिया में, क्योंकि फिल्में बनती हैं, पसंद भी होती हैं, लेकिन उतने नंबर में नहीं बन रही है, तो किस तरीके का फ्यूचर आप देख रहे हैं स्पाई फिल्मों को लेकर? I am confident that G2, see what happened with when G1 came out, it brought back the trend of spy cinema in South India. So there have been so many films that have been announced after Gudachari because of the trend it created. तो हम confident हैं कि हम यही चीज़ we're going to be creating in North India with the G series. Hi Adivi, Princey here. Hi, Happy New Year. All right, so you know, continuing to the question that she asked, which is your confidence amongst the Hindi-speaking cinema. What is the connect that you found? What is your understanding of the Hindi-speaking audiences? That is one question. And the second question is, when it comes to a spy thriller, there's a different mood that comes on screen, you know, in terms of the look, vision. How is G2 going to be like? Was second question, I think let Vinay answer them. So we looked at each other and we smiled and that's what we're looking at for G2, ambition-wise. And to be honest, the DNA of G1 will be intact in G2. The emotions or the sense of action it had, or all the twists and turns. If any of you watched the Gudachari one, you'll know that. We want this to be relevant for all parts of the country, not just a story about a person in Andhra Pradesh or Telangana. So that's something we're looking after. And we also have a plan. This film's going to be shot in 5 different countries. Okay. So the goal is to sort of create a true blue authentic experience. Okay, and about your understanding of Hindi-speaking audiences, your fan following that you have, which is huge now. You know, मुझे बस लगता है हम दिल से बात करें तो दिल से काम करेंगे तो चल जाएगा बस. You know, sure. बाकी सारी चीज़ें तो so even like हम जब नीचे वो पर्दा सब खोल रहे थे ना, मैं थोड़ा सिंपल हो जाता हूँ. मैं वो एकदम वो शोर शराबा मुझे I don't know so well, but I'm just happy to be here and we are very confident कि हम जो experience आपको देने वाला है, it's going to be something you've never seen before. शेष अभी फिलहाल you know this is a spy film actually, you know,
और अभी पठान में भी जब वो वर्ड रॉ यूज़ किया गया था, आई थिंक सो कि स्पाई में भी शायद ऐसा कोई वर्ड यूज़ करे जहाँ पर रॉ करके वर्ड आया हो, तो सेंसर ने चेंज करने के लिए कहा था इनफैक्ट तो उस चीज़ को लेकर आप लोग एज अ फिल्म मेकर कितना उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, और या इस तरह से कुछ हमारा गाइडलाइन त्रिनेत्र है? जैसे उन्होंने पूछा, हमारा त्रिनेत्र है, रॉ नहीं है। तो कहीं पर भी रॉ अगर यूज नहीं कर रहे इनफैक्ट। ओह अच्छा, चलो ठीक है। Vinay, don't write raw in the movie. No, I'm just asking like उस पर आपका रिएक्शन कैसे रहेगा, बिकॉज सेंसर बोर्ड ने कहा था कि ये जो वर्ड है फिल्म आई थिंक कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है, कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। मुझे नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया पठान में, बट Hello. ours is a different agency. Hello, this question is addressed to the director. Look here, please, to your right. I'm here. My name is Siraj Sayed. I'm from filmfestivals.com. The question is, in the most iconic spy series that we've ever seen, the James Bond series, the editor became the director. The editor of a few films became the director. You have done the same journey yourself, and that is he applauding you. Thank you very much. But I should tell my journey first. I was not the editor to begin with. I started as an assistant director for Gudachari 1, and somehow he realized that I'm good at editing, and I sat in editing process of the film, and he made me the editor for Major, and I was also the first AD of Major. So I'm an accidental editor, not an intentional editor. Agreed. So, the question is that in an action film, especially a spy thriller, knowing editing serves half the purpose already. I mean, half your job is done. Isn't it a very great help to know editing when you are shooting a spy thriller, especially? Definitely, it also reduces the cost for the film because we do the short division before and we know what we want. Yeah, to be honest, yeah, it helps a lot for any director to have an edit sense. Sesh, I have another question. With all due respect, I'm sure he's done one little thing more. According to you, which are some of the most iconic, well-edited action films that you have seen? I don't want to name one. There are many good action films. You can name a few, no problem. Indian or foreign, it doesn't matter. I can't remember anything right now. Maybe I'll think about it and I'll tell it to you personally after the event. Thank you. Sesh, I have another question. While, with all due respect, I'm sure Vinay has done and would do a fabulous job. But why not go with the same director? Because usually that creates a more seamlessness. And along with that, another companion thing. No matter how much, and Godachari 1 was very good. I remember during when we spoke at Taj for Major, I even told you about that. And we have had some fantastic spy movies, be it Baby, be it Krishna Garu's Godachari, be it Tiger, be it War. But yet for all, when a Mission Impossible comes, when a James Bond comes, people still say, "Arey, look at what James Bond is doing. Look at what Ethan Hunt is doing." Why is somewhere that respect is lacking? So these are my two questions. Yeah, first question though, I think it was Sheshi's idea that Vinay should direct. Sheshi wants to, for all purposes, he has a different story drive that he's on, and we wanted to continue the G series immediately because originally G2 करने का plan 2018 में था. इन सब ने मेरे बर्थडे के लिए अनाउंस किया था वो, पर मैंने उसके बाद 2 फिल्म्स और बनाए, and now finally, so we couldn't wait any longer, and Shashi was the one who suggested Vinay as the director. So it's not only with Shashi's blessing, in fact it was Shashi's idea. As far as what was the second question again? I'm sorry. The foreign spy. Yeah, वो I think थोड़े हद तक वो हमारा पर्सपेक्टिव भी है, because घर की मुर्गी दाल बराबर types. Because when RRR released, and if you would have asked an Indian person what would Western audiences think कि यहाँ पर नाच रहे हैं, यहाँ पे ये वाले एक्शन सीरीज, हम शायद ये बोलते थे यार हमारे नाच गाने कौन देखेंगे वहाँ पे. But now
the Western audiences are the one dancing at the RRR screening. So कहीं ना कहीं हमारे perspective को बदलने की ज़रूरत है. It's not so much कि ये films अच्छी नहीं बन रही हैं. And hopefully, if you personally felt that, my hope is कि with part 2, with G2, we'll be able to create an experience जो आपको लगे ये उसी level का है. All right, with that, ladies and gentlemen, thank you so much. That's all we have for you. We've covered enough, yeah. Like pre-vision announcement में we've covered a lot of things. हाँ, ये actually pre-release का हो गया था. हाँ, मुझे ऐसी लग रहा है जैसे चल रहा है अभी release date देख लीजिए चाहिए नज़दीकी theaters में, because these people are not gonna say it. They're like very humble to say that, but शोर मचाने के लिए मैं हूँ ना. All right, so it's time for a final photo op now, ladies and gentlemen. And before that, would like to invite on stage a very important gentleman, ladies and gentlemen. Mayank Singhania Saab is here, so. Thanks everybody for being present here today. So we have a vision of making this movie a very big and a very, what do I say? It will be on a massive scale. So we just wait and watch. There is a long wait for this, and it has come now. We'll be delivering something really massive this time. Thank you so much, Singhania साहब. नाम ही इतना फिल्मी एकदम वजन बढ़ गया है यहाँ पे. Thank you so much. जोरदार तालियां इस टीम के लिए, ladies and gentlemen. One more time, please. And we'll have a quick photo op, yeah.